ओम नमः शिवाय। मैं चंदन कुमार मिश्रा आप सभी को आगामी सावन महापर्व जो भोले शंकर को प्रणाम करते हैं, हम पूजा करते हैं 2025 की हार्दिक शुभकामना है। ओम हम जोम शिवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वैद्यनाथमित्युर्मुक्तिमामितात् शिवाजुम हम ओम। आज की कक्षा प्रस्तुतिकरण के दौरान कार्यक्रम प्रबंधन के लिए की जाने वाली कुछ व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसको कि 21 तारीख को लिखा था। आप अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पे या फिर अपने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरह के आयोजन में भाग लेते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सारी व्यवस्था की जाती हैं। आपको पूर्व तैयारी करके और सारा फूडिंग लॉजिंग का व्यवस्था सारा किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ अपना सुझाव आपके साथ साझा करता हूँ। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण हो जाए। उसके बाद जब आयोजन स्थल की बात है तो यहाँ ट्रैवल का पूरा कोऑर्डिनेशन करने के बाद जब लोग पहुँचते हैं, उसके बाद उपस्थिति पंजी में आयोजनकर्ता कलाकारों और भक्तों, दर्शकों या प्रतिभागियों के कार्यक्रम में पंजीकरण करें। नाम, पता, संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी कार्ड दर्ज करें और परिचय पत्र या एंट्री कार्ड दें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। कुल आदमियों की संख्या के अनुसार कार्यक्रम की अवधि तक रोज दिन भर में कम से कम 2 बार नाश्ता पानी, 2 बार भोजन, बाजार से या स्थानीय स्तर पर हलवाई से बनाने की व्यवस्था, बैठने और सोने, नहाने और शौचालय की व्यवस्था करें। स्थानीय प्रशासन या पुलिस से सुरक्षा और विधि व्यवस्था प्राप्त करें। इसके लिए उनको आवेदन दें या संकल्प करें या फिर बता दें कि ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे सही होता रहे यदि कोई समस्या होती है तो। इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर आप अस्पताल और सारे लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम हेतु प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, लाइट, जनरेटर और अन्य व्यवस्था कर लें। कार्यक्रम का विद्यालय की कक्षा की तरह रूटीन बनाएं कि दिन भर या रात तक कब, कितने बजे से कितने बजे तक कौन कलाकार या प्रशिक्षक क्या प्रस्तुत करेगा या करेगी, या जो हिज एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी का क्या प्रेजेंटेशन चलेगा। उद्घाटन हेतु पूजा, हवन, कथा अपने अपने धर्म मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। पूजन सामग्री और स्थानीय पंडित जी को बुलाकर पूजा करा लें या फिर स्वयं अपना जैसे करते हैं। और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कार्यक्रम करते रहें। सभी आयोजक मिलकर बैकड्रॉप, फ्लैक्स और अन्य ब्रांडिंग के बैनर, पोस्टर बनाकर लगा ले। स्पॉन्सर बाई जो होता है, इससे भी प्रमोशन हो सकता है सारे संस्थानों का। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करें। और श्री गणेशाय नमः। अगला है संसाधन व्यक्तियों को मानदेय, ऑनरेरियम, सम्मान, फेलिसिटेशन और स्मृति चिन्ह, मोमेंटो दें। टीए का भी व्यवस्था कर दें। प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान उनके मौलिक वेतन के अलावा कार्यक्रम में शामिल होने के दिनों के लिए अतिरिक्त दैनिक भत्ता, एडिशनल पर डियम दें। कार्यक्रम के दौरान आयोजित किसी प्रतिस्पर्धा संबंधित क्रियाकलाप या प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार, प्राइज और सभी को कार्यक्रम की सहभागिता सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान करें। सर्टिफिकेट में कार्यक्रम के शीर्षक, आयोजकों के परिचय चिन्ह, ब्रांडिंग लोगो, प्रतिभागियों के नाम, कार्यक्रम का विवरण, माता पिता, अभिभावक के नाम, पता, आयोजन की अवधि, कार्यक्रम प्रारंभ की तिथि दिनांक कितना से कार्यक्रम समापन की तिथि दिनांक कितना तक, आयोजन स्थल का पता और कार्यक्रम के दौरान सहभागिता और प्रदर्शन की ग्रेडिंग उत्तम, सामान्य, औसत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आयोजक के हस्ताक्षर और सर्टिफिकेट संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर भी दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कार्यक्रम के दौरान किसी का नौकरी के लिए चयन होता है तो उन्हें प्रस्ताव पत्र, ऑफर लेटर और नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर दें। यदि किसी प्रकार की साझेदारी संपन्न होती हैं तो सहभागियों को साझेदारी पत्र, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, संविदा के लिए नियोजन किया गया है तो साझेदारी पुष्टि पत्र, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, प्रोजेक्ट अलॉटमेंट लेटर या फ्रेंचाइजी लेटर दें। शादी हुई तो लगन पत्री और शादी का पंजीकरण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट दें। इसी प्रकार से आयोजन अनुसार अन्य उपयुक्त पत्र दें। आगे बात करते हैं तो आज के समय में कुछ एक प्रेजेंटेशन है, ये इंग्लिश में है लेकिन इसको भी इसी के साथ बता देते हैं, सारे क्लास नोट्स में ले लीजिएगा। 24 जून 2025 है। आप सभी को आगामी मानसून सत्र जो भारतीय सरकार का है
2025 का, उसके लिए भी शुभकामना मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ, गौरी जी से, कि सबका सही रहे। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दैनिक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की जो मीडिया ब्रॉडकास्ट होती हैं वो भी आपको प्रशिक्षण और सारा तैयारी वारी सब चीज़ के लिए बहुत ही मददगार है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। यूनाइटेड नेशंस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके ब्रॉडकास्ट को देख करके भी आप अपना प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। संसद टीवी हो गया, और भी जो डिस्टिंग्विश एक्सेलेंसीज हैं उनकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको जो आप ध्यान से देखते हैं तो चलता है। आपको दैनिक स्तर पे अपना लिखने का कोशिश करना चाहिए। सुने, देखें, पढ़े, लिखें, बोलें, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ दोस्तों की ट्रेंड्स फॉर स्ट्रेस फ्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ए कंसेप्ट पेपर बाय चंदन कुमार मिश्रा। I would like to request Honorable Excellencies to kindly assure obedience of non-violent, peaceful global cooperation for collaborative development of our humanitarian society, so that the existence of life on this planet Earth could be secured. I am sharing you my presentation about trends for stress-free human resource management, a concept paper by Chandan Kumar Mishra. Like sustainable and equitable human resources management emphasizes on person-specific and or group or class-specific strategies implementation so that they can develop properly. The foresaid strategies includes evaluation and assessment of the curricular vitae, CV, resume of a candidate, or work reports also. Through interview reveals the hidden facets of his or her personality attributes. Even their expressions on Twitter, Google, YouTube, and other news channel also facilitates you to learn about their perspectives and opinions. Exploration on educational qualification and academic skills through written examination and oral test viva facilitates the evaluator to estimate the appropriation of the knowledge of the candidate about the course curriculum. Sense of objectivity and subjective interpretation ability of the candidate. Inquiry about arithmetical and logical reasoning aptitude exhibits sense of rational thinking and decision making ability of an individual. Resultantly, the emotional intelligence of the person to tackle the stress at personal and professional arena could be inferred. Skill upgradation training and handhold support enables the subjected person to pursue for suitable and stable employment for assuring economic rights, security, and life insurance to the people, along with accessibility of the social security schemes of that respective sovereign republic nation of that place of residence or origin. Then experience certificates, project training certificates, identity card, and educational qualification related documents are also reviewed and verified to decide the pay grade, along with inquiring about the economic expectations of the candidate during selection process. As far as assessment of the capability statement of the organization is concerned, it includes review and evaluation of the documents related with establishment, memorandum of understanding, articles of association, accreditation certificate, registration certificates, obedience of standard operation procedure as prescribed by Quality Council of India, International Standards Organization's manual obedience, taxation compliance obedience by TDS, tax deduction at source and or income tax returning filing. Human resources management policy, children welfare policy, women welfare policy, especially abled welfare policy, fulfilling the corporate social responsibilities, approach paper, concept paper, and project proposal formulation capacity assessment are also required.
during the process of evaluation of the working efficacy of any institution. Successfully completed projects, reports, appraisal, cross verification of the books of accounts in accordance with commenced project technical report, review of awards and recognition credentials and other relevant documents review follow with 2. The document review process follow with interview of the deployed human resources personnel for TNA training needs identification and recommendation for capacity building training. FGD's focused group discussion with the management committee to observe the obedience of the schedules of agenda based structure meeting and record keeping for drafting of the minutes of the meeting and passing resolutions. Focus group discussions, FGDs with project team to inquire about their team coordination and leadership skills. Action planning and reporting skills with review of infographics, video footages of the previously commenced activities, and review of the project implementation progress reports. Discussion about human resources management and obedience of labor welfare policy facilitates to examine and mark the concerned organization as competent for empanelment and project implementation, recommended for organization management capacity building training and support, and or blacklist the organization as per the regulatory observations framework by regulatory bodies of the concerned member nations of the United Nations by their respective government. Entities and institutions of sole proprietorship, partnership, private limited, LLPs, limited liability partnership, society, trust, public sector undertakings, knowledge consultancy professional services firms and government sector had or have their own sector specific challenges and stresses which should be resolved through support and empowerment, enforcement of government acts and policies promptly to improve the functional ability of the referred organization, to assure protection of the fundamental humanitarian rights of the involved service person and assure access of technical and financial support related opportunities to all associated persons sustainably for their personal, social, academic, career, and economic progress and prosperity during the tenure of their services with concerned organization. Proactive governance and approaches for survey, empanelment, assessment, and granting of proposals could be commenced. Documented and notified transfer, promotion, or deployment and willful job organization change by working person after all. A person shall remain free to decide to either continue to work or leave the job with any organization at his or her independent will or choice or decision to follow his or her or their own dreams. They can shift their profession also as per their choices, aspirations, career, and success anytime as he or she formulates for himself or herself. Best wishes for our future endeavors towards our personal and organizational sustainable development. आप सभी को एक बार फिर से अग्रिम सावन महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि 2025 छठ पूजा की अग्रिम शुभकामना है। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।